So students, this is lecture 1 related to chapter cost. So let us start with this particular PowerPoint presentation. See, basically in this we will understand the meaning of cost. Okay, we have already understood what is production. Now after production comes cost. Okay, so here first and foremost आपके पास definition है कि cost होता क्या है. सबसे पहली चीज understand. Cost is expenditure incurred by firm on what? For production. See, simply, if you are a producer, you will be doing expenditure. Expenditure किस पे करोगे? आप करोगे towards the producing of goods or service. Now, firm के पास दो तरह के cost होते हैं. एक तो होता है explicit cost, एक क्या होता है? Implicit. Now, understand these words. One is explicit and second is implicit. Again, I am reading the definition in front of you, beta. That is, cost refers to expenditure incurred by the firm on explicit cost as well as implicit cost. And cost in economics means the economic cost. मतलब हम total cost की बात करें तो simple formula of total cost is explicit cost plus implicit cost. Is this clear, student? हमको क्या करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को प्लस करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज दिस एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज दिस इम्प्लिसिट? एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट आल्सो, it is the economic cost which is divided into explicit as well as implicit, और इन दोनों को add on करके we will get the overall economic cost. Okay, so when we add on this particular thing, that is overall explicit and implicit, that will be giving you a total economic cost. Okay, now let us understand the difference between implicit and explicit cost. See, जो आप actual में payment दे रहे हो, जैसे suppose you are paying rent, you are paying for raw materials, you are paying for anything. So here payments made to the outsiders are called money cost, or it is also known as explicit cost. आज अगर मैंने rent पे करा, आज अगर मैंने wages पे करी, आज अगर मैंने salary पे करी, so ये सारे expenses क्या होंगे? ये सारे expenses होंगे आपके explicit cost. Or implicit cost you are not paying, you are only calculating for the owner. It is the imputed value of the factor provided by the owner. जो factors of productions होते हैं, आपको बताए थे 4 factors of production, तो उनकी imputed value क्या है? That will be known as implicit cost. We will able to understand with the example. जैसे imputed salary for own services rent on the self land. मान के चलो एक particular person है जिसने अपने ही लैंड में अपना बिजनेस स्टार्ट करा. अब अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो ये लैंड किसको देता? किसी को देता, और उसको क्या मिलता? रेंट. पर अभी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसमें, सो ही इज नॉट गेटिंग दैट रेंट. So that will be what? Implicit cost, because that cost is lost. Coming to your explicit cost, it is wages of the labor. As I already told you, ये वो सारे expenses है जो हम pay करते हैं, जैसे wages of labors, raw material, purchased, fuel. So these are actually paid. Okay, understand students, these are actually paid. Coming towards the next, that is particularly after imputed, next is it do not appears in the accounting records as we are doing accountancy also. So implicit cost बेटा कभी भी accounts में नहीं लिखते हैं, हम वही खर्चे लिखते हैं जिनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं. दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट दैट आर अपीयरिंग इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हम वही पर्टिकुलरली रिकॉर्ड्स लेंगे जो हम क्या अपीयर करेंगे, दैट विल अपीयर in the accounts. And implicit cost is that cost which is not appearing in accounts. It is only calculated from economic point of view. Explicit cost always appears in the account. Now let us move on to the next slide after differences. Okay, before going on last slide, there is one formula, that is economic cost is always equals to explicit cost plus implicit cost. Okay, now moving further is the example. See,
Students, whatever example is in front of you, just suppose of explicit and implicit, ये आप actually pay कर रहे हो, and implicit you are not actually paying. That is interest on capital, imputed salary, imputed rent. These you are not paying. बाकी ये सारे expenses आप pay कर रहे हो. Interest on loan, wages, depreciation, rent on building. These all you are paying. That's why it is known as what? That's why these are known as your explicit. आप हमेशा ये pay करते हो. Implicit you are not paying. आज आपने बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, वॉट एवर इज योर इन योर बिजनेस, सपोज यू हैव गिवन 10 लाख इन दी बिजनेस, कितना लगाया, सपोज टेक द एग्जांपल दैट यू हैव गिवन 10 लाख इन दी बिजनेस. अब उस 10 लाख को अगर आप बैंक में रखते तो आपको क्या मिलता, इंटरेस्ट, पर वो इंटरेस्ट अब मिल नहीं रहा है, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज नॉट बीन रिसीव. दैट्स व्हाई इट इज इम्प्लिसिट. Imputed salary, I will not take out the salary for my own services as a owner. नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड रेंट, मैंने बिल्डिंग अपने लिए यूज कर ली, तो जो रेंट मुझे मिल सकता था दैट इज गॉन. ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. नाउ let us understand with an example. Calculate implicit and explicit from the following data. See, investment in fixed asset is 2000. Okay, borrowing at 12% per annum, wages, annual rental value of owner's factory building. Okay, value of asset estimated life is 10 years, and then estimated value of management service to the owner. अब अगर सबसे पहला देखूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा, क्योंकि मैंने बोरोइंग्स ली है, तो 1500 का 12%, दैट इज 180, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. वेजेस पेड, अगेन मेरे यहां से पैसा जा रहा है. Depreciation, as I have calculated 1000 divided by 10, so depreciation total is this. Now coming to implicit, जो आपके यहाँ से पैसा नहीं गया लेकिन आप उसे कंसीडर करोगे, that is 12% interest on loan. आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा, जितना इन्वेस्टमेंट करा है उसका 12% सोचो, तो वो कितना आ जाएगा, that is implicit. Rent, जो आपको मिल सकता था लेकिन आपने अपने ही बिजनेस में उसको यूज किया, so that will be not be used. Next is salary towards own. Here is 12% interest on capital. So whatever investment you have done, this is the investment which you have done. So वो अगर investment आप अपने बैंक अकाउंट में रखते तो आपको 12% का क्या मिल जाता है, interest. Next is rent of your own. Okay, here they have given annual rental value of owner's factory, that was 100, that is missing. तो यहाँ पे रेंटल वैल्यू जो हम अपने लिए यूज अगर नहीं करते या किसी पर्सन को देते तो मुझे 100 रुपीज मिलता, दैट इज योर रेंट. कमिंग टू सैलरी, दैट इज 240, इट इज ऑलरेडी मेंशन. एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ द ओनर. सो ये सारे क्या है, एक्सप्लिसिट यू आर एक्चुअली पेइंग, सिंपल, जो हम एक्चुअली पे करते हैं वो हमारा बन जाता है एक्सप्लिसिट, एंड विच वी आर नॉट पेइंग but it is being calculated because ये सारे के सारे क्या हैं, opportunity cost. Now understand what is opportunity cost. Opportunity cost is that cost which will be considered as implicit only. Implicit का दूसरा नाम क्या है, implicit का दूसरा नाम है आपका opportunity cost. Okay, now moving further. Time element in cost. टाइम एलिमेंट क्या होता है भैया, यहाँ तो लॉन्ग रन होगा, यहाँ तो शॉर्ट रन. ऐसा आपने प्रोडक्शन फंक्शन में ही पढ़ा था. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी होते थे और क्या होते थे आपके शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी होते थे. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी होते थे और हमारे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी होते थे. As already told you, there are again two types of cost, that is long run cost as well as short run cost. Now moving on to the next slide, that what is the difference between long run cost and short run cost. सबसे पहला difference, period in which some factors are fixed and some are variable. तो याद रखना short run में आप दो bifurcation कर सकते हो. एक तो होता है आपका fixed cost जो होता है fixed factors पे, और एक क्या होगा आपका variable cost. You will be getting what? One is fixed cost and another one is variable cost. Moving further is long run cost. Period in which all factors are variable. मतलब long run में कोई भी fixed cost नहीं होगा. Every cost will be a variable
cost. Is this clear? Here you will be bifurcating either into fixed or variable. Variable matlab that changes. Fixed cost which does not changes. Here moving on to the next difference. Cost of production incurred in short run, that is on variable factors, are called short run cost. Okay, incurred किस पे करेंगे? Variable factors पे, तो उसको हम बोलेंगे short run cost. Cost of production on all factors in the long run, all factors become variables, are known as long run cost. Is this clear? Now let us move on to the next topic. It is cost function. Okay, cost function is what? Simply understand, it is a functional relationship between cost and output. जैसे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन था. सो यहाँ पे भी किसके बीच में रिलेशन है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. देखो, प्रोडक्शन फंक्शन में हमने रुपी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था. हमने क्या बोला था कि इफ आई एम टेकिंग 10 लेबर्स एंड 1 मशीन, आई विल बी गेटिंग व्हाट? 100 प्रोडक्ट्स. बट हियर अब मैं किसकी बात करूंगा? अब मैं बताऊंगा कि 10 लेबर्स और 1 मशीन इनपुट नहीं. अब मुझे ये देखना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 labor and what is the cost of 1 machine. So here I will be calculating a relationship, or it will be a relationship between what? The cost and the output. मतलब 100 products produce करने के लिए overall cost कितना लग रहा है? That is what is known as cost function. Simply a relationship between cost and output. Symbolically, the cost function is C is equals to F upon in bracket Q. Q is your output. Here you can see C is your cost, F is denoting function, and Q is your particularly output. Thank you, listeners, for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you, listeners.